of भैया the सॉरी मैं कट nation. कर रहा हूँ, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि बात है रिलीजियस आपकी एफिलिएशन की टू अ सर्टेन लैंड, टू अ सर्टेन मॉन्यूमेंट भी आप कह सकते हैं, और वो कभी नेशन स्टेट्स में भी चेंज नहीं होती, एंड वी हैव सीन दैट। हाँ, जिस हिंदुओं के तरह भी हैं करतार, ऐसे, रिसेंटली हिंदुओं के रिसेंटली तिब्बत इंडिया में हैं। पाकिस्तान में करतारपुर को देख लेना, ठीक है, बिल्कुल। नहीं चेंज होती, तो वो इट्स अ पॉइंट क्या है, मैं वेरी पॉइंट नहीं वैलिड समझा उससे। आर्गुमेंट। जी जी। बिल्कुल है, मुस्लिम्स के लिए वो रिवर्ट जगह है, वहां मुस्लिम्स जाते हैं, दे प्रे देयर, वहां पे क्रिश्चियंस भी जाते हैं, उनकी भी रिवर्ट जगह है, ट्रैवलर्स दुनिया से आते हैं, दे गो देयर, दे प्रे देयर। वहां पे जो है जूस भी आते हैं, वो जो वॉल है वहां पे आके जो है वो अपनी प्रे करते हैं। ठीक है, जिस जिसके लिए वो जगह हिस्टोरिकली या रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, दे गो देयर, दे वर्शिप। ठीक है, और जो वहां पे रहते हैं नेशन स्टेट के जिस सिस्टम में, वो जो उसके सेट रूल्स हैं उसको जो है ओबे करते हैं। अब हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, माउंट कैलाश इज वेरी रिवर्ड, बट इट्स नॉट अंडर इंडियाज कंट्रोल। तो जो इंडियंस हैं वहां पे जाते हैं परमिशन के साथ में, और वहां पे जो है अपनी पूजा करके वापस आते हैं। पर ये अब मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ कि यार मैं चाइना को कह सकते हैं इंडियन की, यार हमें जो है आप जो है माउंट कैलाश हमें वापस दो, क्योंकि हिस्ट्री में हम यहाँ पे पूजा करते थे। दिस नेशन स्टेट के सिस्टम के अंदर जो है, इट्स नॉट योर इमोशन दैट प्लेज द रोल, राइट? जिसके पास वो नेशन स्टेट में जो पार्ट आता है, दे सेट द रूल्स। इसी लॉजिक से आदित्य जी अगर हम बात करें तो इफ आई में मैं आंदोलन जी के कुछ जो से उन्होंने पॉइंट्स दिए थे उनको थोड़ा सा आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो से पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं आंदोलन जी, उनके जो चिल्ड्रन है, उनके अंदर हम आते हैं, उन कबाइल के जो से औलादे हैं वो हम हैं, हम कुरैश के जो से बुत परस्त थे वो इंक्लूडेड है। अगर आप मदीना के कबाइल की बात करें, बनी औस, बनी खजरज, वो हैं, तो वो तो सब जो से हो गए मुसलमान। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनरशिप ऑफ polytheists, यहाँ पे if you want to say that all the polytheists are Hindu, well, let it be. I will accept it for the sake of the argument. लेकिन the people who belong to those lands, their children are alive. We are their children, and we are Muslims. Secondly, आंसर आपने आप बात की रहते कि कहाँ वहाँ पे पे हैं? जूस आए। जी मैं पाकिस्तान में इस वक्त रिहाइश पसीर हूँ, तो एंड आई एम क्वाइट जैसे जैसे इजराइल कंफर्टेबल। ने जैसे जैसे इजरायलियों ने कब्जा कर रखा है इसराइल का, वैसे आपने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान में, आप ये कहना चाह रहे हैं, पर हैं आप सऊदी के। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं सऊदी अरेबिया में अगर जाना आई एम चाहूँगा जस्ट मुझे जाया एक्सटेंडिंग द जाएगा, लॉजिक, हाँ, और जस्ट मुझे एक्सटेंडिंग द लॉजिक, हाँ। the logic doesn't fit here ना। बात ये है कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ Hijaz. Hijaz as a country does not exist anymore. Nor am I a citizen of Saudi Arabia. I am a citizen of Pakistan. For the past 9 generations, which I remember in my brain, on the tip of my tongue, we have been living in the region of Kashmir and Punjab. Before that, that would make about 400 years. Before that, my ancestors were in Bukhara. And before So that, they were in the Iraq. limited And point I before was that, meaning, the limited point I'm making, my friend, here is, so let's say the native populace of Pakistan would tomorrow ask you that you are here from 200 years. Now go back to where you belong. What would but you I say? am the native Is populace the of is the is Pakistan. the So is the I same would say, question I Palestinian, would say, is the same question Palestinians are asking the Israelis? here's the thing. Actually, I would say that I am the native population of the land. At least in the modern, That's in the what the modern. Israelis are saying. Yes, but there's a little bit of a problem there ना। पहली तो बात ये है, in the modern times when we actually have laws and international understanding of things, that things cannot go back to time memorandum, हम 5,000 साल पहले अगर जाएंगे तो फिर हम 10,000 साल पहले क्यों नहीं चले जाएंगे? हम वही तो हजरत कह रहा हूँ, तो इब्राहिम फिर के 50 नहीं, साल हम पहले क्यों हजरत जाएंगे? इब्राहिम के दौर में क्यों जाए? नहीं, देयर इज अ रीजनिंग टू इट ना।
people, at least in the modern day and age, have set a little bit of a Yeah, standard of I think, about 3 to Sid, 4 I've come to the generations. conclusion in regards to this specifically, that's a very, very, very sentimental statement, and Jews are not going anywhere, just like the Muslims are not going anywhere from that land. They should not, And nah. But that's not the point. The yeah, but if your Israel-Palestinian purpose is problem to is bring not. some kind of peace or some kind of resolution, that is too much to expect. That's not going to happen anytime soon. Then you have to Shahji's acknowledge peace the does fact not that this come is by an begging. ongoing conflict, and there is no end to it. Actually, Shahji, इसमें जनाब इसको थोड़ा सा मैं इसलिए अच्छा वापस क्षमा करिएगा मैं Andol हाँ ji, एक second. Like I think we are entering the last quarter of the live session, and we have a new speaker, Infinity. I would like to have your opinion and thoughts on the topic, and I would advise Shaji to work on his punctuation and formatting. Yeah, G Infinity. Hi, everyone. I'm sorry I joined a bit late, but a very interesting conversation going on. Unfortunately, there's no denying, uh, powerful, whenever there's power, आप किसी भी मुल्क को, किसी भी geographical area को आप एक तो कहते हैं ना कैप्चर कर लेते हैं, तो उसी की सुनी जाती है जो पावरफुल होता है। चाहे आप अपने मुस्लिम एरा में चले जाएं, when we were powerful, we conquered a lot of area. हमने बहुत अच्छा ठीक-ठाक एरिया को हमने कवर किया। Whether through might, whether through persuasion, हमने लोगों को मुस्लिम किया। जो भी आप कह लें उसको, बहुत से हमने worshipping areas को जो लोगों की जो कहते हैं ना institutions थे, that places of worship, we converted them into mosques, whether forcefully or whether persuading people into doing that. And now when our own places are being converted into places of, whether it's for Jews or whether it's for Christians, it hurts, of course. But the big reality really always will be, जो ताकतवर होएगा उसी की चलेगी, जिस भी era में। it does not Unfortunately, it's यही है रूल हर जगह। चाहे अब आप कोई भी जियोपॉलिटिक्स ले लें, लेकिन एज़ फार एज़ माइग्रेशन इज़ कंसर्न्ड, दुनिया में बहुत सी नेशंस ने माइग्रेट किया है दुनिया भर में हर जगह पे। माय रूट्स आर आल्सो फ्रॉम ईरान, एंड सम इवन से कि ईरान से भी पहले थे हमारे अगर हम फैमिली ट्री अपना निकालें। आई कैन गो बैक देयर। दैट वाज़ लाइक 5, 6, 7 generations back when my ancestors were from there. कोई कहते हैं जी कि अलेक्जेंडर की आर्मी से के साथ आए थे, तो whatever it is, all I know is where I was born in, where I was raised, and that's where I relate to, right? और अगर मुझे मेरी कोई affiliation है तो मेरी affiliation उसी region से है where I was brought up, मेरी attachment वहीं से है। As far as Palestinians are concerned, अब we can't just argue कि हाँ जी वो चूँकि मुसलमानों का था इतने अरसे तक, तो मुसलमानों को राइट है उस पे करने का। The best thing would be to allow the Palestinians some place where they can raise their generations peacefully without being constantly harassed by the Israeli army. That's all we all need to work on right now. उन्हें भी कोई एरिया दें, और ये बात इजरायलीज को बहुत इम्पोर्टेंट सोचने की है कि they went through this. They went through all this homelessness. Throughout the world, they were just scattered all over the places. हर जगह से निकाले जाते थे, यूरोप से निकाले जाते थे। कितनी उनको उनका genocide हुआ है। Like the entire world sentiments are with them, and for them to do all of this to a very small portion of, बहुत छोटे से land रह गया पैलेस्टाइन के पास, 25 miles I believe, 25 kilometers. तो ये कि उन्हें भी वो ख्याल करना चाहिए कि वो हरास ना करें इतना लोग पैलेस्टीनियंस को कि वो तंग आके हर कुछ अरसे के बाद यूज अप हों बाय अदर नेशंस। अब हमास जो है
Whatever their reality is, whether it's the US supporting them and playing the game, whether it's Iran doing it, whether whoever is doing it, at the end of the day, उसका जो कहते हैं ना खमियाजा वो भुगत रही है वो वहाँ के बच्चे छोटे-छोटे every single I mean I'm hating going to social media now because every time I just open up my phone I see dead children and it hurts like anything. So let's just focus on how can this issue be resolved? What can be done? Like whether it's the Arabs who can do this, I believe it's the Arabs' hand. It's in the Arabs' hands. They are the ones who should have resolved this long time ago. This entire issue is because of the Arabs. कभी भी Arabs ने कोशिश नहीं की कि Palestine issue resolve हुए. Never ever. And I believe it's still in their hands to resolve this once and for all. That's all I believe in right now. And this is what I really want right now. I don't care about whatever happened in the past में क्या हुआ No, किसने but किसको how do क्या you किया. think the Arabs can resolve it? Sorry? How do you believe that Arabs can resolve it, and like what will they have to do to resolve it? And are they the only party whose hands it's in? Except for Jordan and Egypt, जिन्होंने openly condemn किया है in actions को, and they are the ones who have also in the past, allowed refugees in their land. बाकी और किसी अरब कंट्री ने ओपनली तो रजिस्टर भी नहीं करा जो प्रोटेस्ट है, let alone open dialogue with Israel and come up with some sort of solution for this because they never wanted that, and I don't think they're still interested in it. So problem ये है कि हमारी अपने अरब्स ऐसे हैं तो I don't क्या हो सकता है बात क्यों नहीं की जा सकती. Come to the table. There's always a peaceful solution to, at least give those people that even 25 miles के area ही अगर देना है उनको, उसमें भी peacefully रह सकते हैं वो. और दूसरी बात ये है कि Hamas has to go. Hamas, I don't think they even speak for their people. Every time Hamas does something, the people of Palestine they pay for it really badly. Like उनके proper genocide session शुरू हो जाता है हर बार. Every single time. अच्छा आपके जहन सिड में एक इसका सेकंड सलूशन अच्छा सिड एक सेकंड में एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ कि इन्फिनिटी ने एक चीज कही कि लाइक आई डोंट नो व्हाई द अरब्स वुड नॉट कंडेम इट because they can't, they are the biggest beneficiaries of the system, not the system of the conflict in Palestine, but the western enabled whatever system that you call it, right? It's ये हाउस ऑफ साउद या ये जो आपके मिडल ईस्ट में जितनी भी जो हैं ये क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई और जितने भी आपके जो रॉयल्स हैं ये कोई अपने आप ये कहीं से जो है हमारे हिंदी में कहते हैं जैसे प्रकट हुए हैं. ये जमीन किसके पास थी 1920s तक या 1910s 1930s तक? ये इनको किसने एस्टैब्लिश किया? यहाँ पे जो ऑयल रिच रीजन था यहाँ पे इनको कौन लेके आया? यहाँ पे क्यों नहीं डेमोक्रेसी आई? उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज द क्रिएटर्स ऑफ दीज कंट्रीज नेवर वांटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर दिस लैंड. Who created this system? Who created these क्या कहते हैं ये जो रॉयल्स इनको बनाने वाला कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. या हाउस ऑफ साउद कहाँ से आया है भाई? कोई बता सकता है? सऊदी अरेबिया का नाम सऊदी अरेबिया क्यों है? हाउस ऑफ साउद कौन है? कोई हिस्टोरिकली इनका कोई जो है इस लैंड पे कोई रूल करने का कहीं लिखा हुआ है कि दे आर सपोज टू रूल दिस लैंड किसी पेपर पे? नो, बिकॉज हाउस ऑफ साउद वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. They are the system. They will never condemn it because they are the beneficiaries of this system. या आदित्य, एक मुझे प्रॉब्लम होता है जब भी आर्ग्यूमेंट या बहुत पास्ट में चला जाए या बहुत फ्यूचर में चला जाए. we should stick to the present. और उसमें अगर हम डिबेट करें क्योंकि पास्ट का हमें पता है but we can't like cry over it. Future नहीं we फुरकान भाई, don't know. this was क्योंकि important because we this is believe कि I understand. these are independent nations. They are not. But current ये situation पेट्रोडॉलर और कहाँ से उनकी आया नहीं है? नहीं नहीं नहीं
current situation and current alignments are a bit different. I would phrase it that way. और क्योंकि आंदोलन was going into or आंदोलन or was it you? In terms of Israel, it was you going into the future. कि अगर